Assalamualaikum dear students, this is Naeem Safdar from Orchard Grammar School. In this video you will study types of square matrix. As you know, what is a square matrix? A matrix in which number of rows is equal to number of columns is called square matrix. Now we have types of square matrix. We have three main types of square matrix: diagonal matrix, स्केलर मैट्रिक्स, नंबर 3 इज यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. स्टूडेंट्स, इन तीनों टाइप्स पर आने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ये जो क्रॉस होता है, ये जो ऑब्लिक अरेंजमेंट होती है फ्रॉम फर्स्ट टू द लास्ट, दिस क्रॉस, दिस ऑब्लिक अरेंजमेंट इज नोन एज डायगोनल एलिमेंट्स. जैसे कि इस मैट्रिक्स में लिखा हुआ था 1 2 3 4, तो फर्स्ट था 1 और लास्ट था 4, तो फर्स्ट से लास्ट ये जो अरेंजमेंट बनती है इसे हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स. और उसके अलावा जो होते हैं 2 और 3 उन्हें हम कहते हैं नॉन डायगोनल. हमें यहां पर कंसर्न है डायगोनल एलिमेंट्स से. मैट्रिक्स है A B C D E F G H I. इस मैट्रिक्स में फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक, फर्स्ट है A शुरू में, बिल्कुल एंड में है I, फ्रॉम फर्स्ट टू द लास्ट, ये जो ऑब्लिक अरेंजमेंट है इसे हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स. अब आपको डायगोनल एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो इसके बाद अब आप डायगोनल, अब टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा. वी हैव डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स. ये जो तीनों टाइप्स हैं ये डिपेंड कर रही हैं डायगोनल एलिमेंट्स पर. अगर ये डायगोनल एलिमेंट्स डिफरेंट हुए, अलग अलग हुए, तो उसे हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स. अगर ये डायगोनल एलिमेंट्स सेम हुए तो उसे हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स. अगर ये डायगोनल एलिमेंट्स में सिर्फ 1 1 अगर आ गया तो उसे हम कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स. देखते हैं एग्जांपल्स में. डायगोनल मैट्रिक्स, D4 डायगोनल, D4 डिफरेंट डायगोनल एलिमेंट्स रखने हैं आपको. लेट्स सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2. अब आपको यहां पर डिफरेंट रखना है. 1 और 2 डिफरेंट हो गया, आपको डिफरेंट रखना है, आपने 5 और 6 रख दिया. वी हैव a diagonal matrix of order 3 by 3. Let's suppose we have A, B, C. If diagonal elements are different, then this square matrix is known as diagonal matrix. If S4 scalar, S4 same diagonal elements but except 1. If diagonal elements are same but not 1, same means 2 2, same means A, same means 5 5. Let's suppose we have a scalar matrix of order 3 by 3. Now okay, come to unit matrix. Unit matrix, diagonal elements must be only 1. Unit means what? Unit means 1. Okay, 1 1. This is square matrix, this is unit matrix of order 2 by 2. Now we have a unit matrix of order 3 by 3. 1 1 1. Okay students, now what about the other elements in these types? Okay, for types of square matrices all other elements must be 0. सिर्फ और सिर्फ 0 रखना है आपने टाइप्स में. 0 0 0, सब 0 कर देने आपने. Now we can easily define types of matrices is diagonal matrix, a square matrix in which diagonal elements are different and all the other elements are 0 is called diagonal matrix.
How can we define scalar matrix? A square matrix in which diagonal elements are same but not containing number 1, and all the non-diagonal elements are 0 is called scalar matrix. How can we define unit matrix or identity matrix? A square matrix in which diagonal elements are only 1 and all non-diagonal elements are 0 is called unit matrix. Students, unit matrix is denoted by I. This is unit matrix of order 2 by 2, so it is denoted by I2. This is unit matrix of order 3 by 3, so it is denoted by I3. I hope you understood the concept of types of matrices, types of square matrices. In case of any query, you may comment. Inshallah, we will reply you soon. Thank you.